Hi everybody, welcome to this very special and exciting episode of Unscripted with me, your boy Ozan. But ये episode start करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ. I'm sorry to my guest today because I am being the third wheel here on their very romantic, very pyara, very Valentine special dinner that they had. And I came to know that they are coming to this restaurant and I was like, okay. How about I just crash and just talk to them about something really important and I really want to know about their love story. So here I am with two of my very favorite and the jodi that I adore. It's Farhan Saeed and Urwa Hussain. How are you guys? Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm sorry, first of all, I'm crashing your very romantic getaway, but आपने मुझे forgive किया, right? Of course. that was very sarcastic, but yeah. So today I really wanted on this Valentine's Day. Obviously, we talk about love. We talk about every lal gulab, dil, mohabbat, sab kuch. But not everybody know about how you guys like started off. पहली बार पहली मोहब्बत किसको हुई कैसी हुई all this stuff. So are you guys comfortable sharing that with us Sunday time especially? Yeah. Sure. You want to tell? Okay, so I have questions इधर लिखे हैं अमूमन मैं unscripted तरीके से करता हूँ इस दफा मैंने questions लिखे हैं मैंने कहा क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए आज. Okay, so how did you both meet and was it like love at first sight or like friendship first and then love? कौन दे रहा है जवाब? ये आप दोनों पे ये आप हमें बताएंगे कि किसने जवाब देना है या दोनों ये बताएंगे? में इनमें हमें से कोई भी दे ये जवाब तो एक ही चलो आप होगा. बताओ. आए सही बात नहीं हम मिले कहाँ ये तो एक ही होगा. होगा obviously but you guys can like compliment each other. Actually हम एक दोस्त की गेट टुगेदर पे मिले थे and I liked her the first time I saw her Yeah. and we took our time, we kept meeting and then we actually fell for each other. Yeah, I think for me also I really liked him. But so when we spent time together, फिर जब बात हुई, फिर दोस्ती हुई, Nice. फिर उस पे आएंगे, मोहब्बत हुई. How do you मतलब how did you know that you had found the right person in each other? अच्छा ये मुझे मेरी स्टोरी याद है क्योंकि he just we are talking about that get together. Yeah. So what I remember is his kindness. So there was a situation where everybody else was laughing and he was like, I'm not going in the details, but he Yeah. told everyone, guys, what are you doing? Stop it. ये Yeah. क्या हो रहा है? I can totally And imagine है ना? Yeah. And he was not doing that to show anybody anything. Yeah. He was genuinely saying that, and that kind of No, melted. laughing on somebody. What did I say? You said laughing. हाँ, laughing on somebody. Yeah. Yeah. हाँ, not just laughing. हाँ, अच्छा मैंने ये नहीं कहा. तो मुझे I can totally imagine him I think doing I remember है ना? हाँ. तो मुझे उस moment में I felt like my heart kind of melted cute. there. Are you a good karma comes back? So because I've met trillions of people. Yeah. तो she's one person जिससे मुझे लगा कि जिसका heart is so pure, Yeah. it's so at the right place. So that's what made me just Go ahead. yeah. It's crazy how much good heart she has. Yeah. तो मुझे तो आपका show already अच्छा लग रहा है. These are not the compliments that he gets every day. But I think वो कोई unspoken पूछता नहीं है words ना भी कि होते what do you हैं ना? like about her? So Yeah. yeah. हाँ मुझे नहीं थके हो कि पुराने क्वेश्चंस करने के और जी ये वो तो सर मैंने कितने नए लाए मार्केट में. Okay, do you recall your first date? What made it special? I मुझे took याद her है. to Cuckoo's Cafe. Yeah. बहुत मेरा favorite spot होता था उस वक्त. It's been what? How many years? More than 10. Quite, yeah. More than 10. तो उस वक्त मैं बहुत जाता था अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे भी. So I took her there and I think we had a great night. Yeah. Great we date did. night. Yeah. Absolutely. Yes. I would not ask for any details. मुझे ये नहीं no I don't even like remember कि मैंने क्या खाया था क्या नहीं. I was just listening and I was just like you know वो नहीं होते आपकी क्या And he's बस charming, सुन रहे हैं. honestly. Yeah, हाँ. absolutely. Yeah. Okay. Has Farhan ever written a song especially for you and then released but nobody knows about that song कि वो आपके लिए लिखा गया था? Aha. Interesting. No, there was this song before we met, so I recorded it,
बट जब हम उसका वीडियो करने जा रहे थे तो आई चोज दैट सॉन्ग बिकॉज आई डेडिकेटेड दैट सॉन्ग टू हर एंड वी Yeah, शॉट इट yeah. टुगेदर दैट वाज साथिया वी शॉट मतलब इन ऐसा बर्लिन फॉर्मल कुछ नहीं था कि सोच के मेरे लिए लिखा इट्स लाइक but साथिया तुझको जो मैंने पा लिया जीने की कोई उम्मीद न थी तुझको वजह बना लिया सो दैट्स Cute. Yeah, The so- lyrics are so nice. yeah so that's what I dedicated to her. Okay, now cute. That is very cute. So how has your it's gonna lo- be a cute show. It is a cute show. It is supposed That's the kind of questions Ozan has for us yeah, today. it's a cute ones. How has your love for each other evolved over the time, like over the years? Because it's been more than 10 years that you guys are together. So. I feel like जितना जो कि बहुत मुझे अच्छी बात भी लगती है ऐसा मुझे लगता नहीं था होता है बट मुझे लगता है कि जितना मैंने फरहान को ज़्यादा जाना है ओवर द years आई थिंक आई लाइक हिम मोर एंड आई फॉल फॉर हिम मोर यू नो लाइक जब आपको किसी की आते हैं और आप जब देखते हो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन दे आर सो आई थिंक एवरी डे आई गेट टू नो हिम मोर एंड लाइक हिम मोर for sure. Same Yeah, goes for like me genuinely. also. I am getting to know him more and more better these आपके days. साथ भी यही हो रहा है? Yeah, Oh I'm my falling in God. love with him again. But honestly, मैं अपना वो आपके बारे में because उर्वा के साथ तो I gelled in immediately when we Yeah. were shooting the cover. Yeah. But with you, honestly, I felt like we met so many times back and forth. और मैंने आपके साथ पहले किया है काम बनिस्बत उर्वा के because we did the कब? interview for Tij Button times, Oh, yeah. promotion times. Yeah, Oh, you guys did? मैं नहीं Yeah. थी उस पर? you were कौन सा इंटरव्यू था आपने एक ही ये? जवाब दिया तो मुझे याद है वो कौन सा इंटरव्यू था we were ये? at this mall में था yeah ओह अच्छा लाइक मीडिया Yeah, जंकेट media junket, उसमें तो नहीं हाँ, ओजान हाँ, याद रहता ना कौन हाँ, कौन वो बैठा हुआ हमने था किया था क्विक सा सेगमेंट हाँ but लाइक वी डिडंट रियली मीट है ना yeah we did हाँ, we did हाँ, हाँ. but as we met at the Maura's wedding also and everything but I found you guys both I need to tell this on camera please Oh, nice. The food ये has हमें arrived. खाना भी आ रहा है साथ साथ मजे की चीज़ है मुझे भूख भी लगी है खैर but I was saying that I have enjoyed your company and apart from that you guys are outstanding host Oh, that's sweet. outstanding host Thank you. thank you for that thank you so much शुक्रिया Achha, I have this really interesting question. That after your on-screen pairing in Udari, fans started shipping you guys. Yeah. So usse pehle you guys were together, right? या So how was that? Like, awam ko kaise, you know, they get the vibe when they start shipping you. Yeah, I guess that was reflecting on है ना? screen also. हाँ, हाँ. absolutely. You guys had Huh? outstanding chemistry. हाँ, Thank that was because Well, I always say I could have done better in Udari. I Yeah, he always, says that. Always No, say no, that. If You've done a fantastic job. Thank you. But you know, I tell you a very interesting story related Yeah, to yeah. this. So we were in Berlin for a fashion show and I was performing. They were walking. So जब मैं sound check करने जा रहा था तो the people were starting to come. Yeah. You know, तो वो line लगी हुई थी. तो जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो एक बंदा चीख के कहता है फिक्र ना कर अर्श बेटा मीरा तेरी है. So you know the Udari's last episodes were Yeah. about to come, but you Yeah. know people were shipping already. Beautiful. वो आपकी chemistry हमें ज़्यादा वो नहीं encourage कर रही थी to watch more, watch I more, know. watch more. No, but I think So, credit where it's due. I think it was beautifully written Yeah. by Yeah, Farad. absolutely. Ishtiyaq. beautifully shot, Beautifully directed by Tisham. Yeah, yeah, I think all of Exam is fantastic. yeah, all of them did a great job. Okay, so how did you celebrate your first Valentine's after you got together? I really want to know about the मुझे details. जो याद है हाँ. मुझे लगता है हम डिनर डेट्स पे बहुत जाते थे फरहान ऑलवेज टुक मी आउट टू लाइक restaurants He's and bud. I wasn't He's really a foodie That is though interesting. हाँ? मैं कहा he's a bud, so he's a हाँ foodie. और मैं नहीं थी अब मैं हो गई हूँ अब मुझे लगता है कि मैं हो गई हूँ बट लेकिन ये but- है कि तब मैं बिल्कुल मुझे खाने का कोई इतना बट यू नो ही वुड नो कि अच्छा वहाँ ये अच्छा है वहाँ वो अच्छा है But I don't know So- बाकी सब लोगों का, but if you know Kashmiris, Yeah. so हमें घर का खाना सबसे अच्छा लगता है. Yeah. So, हाँ हाँ so no but you made me try like all the different yeah, Valentine's तो फिर Places. हाँ, it was special होना चाहिए. special होना चाहिए. हाँ so हाँ कुछ इस तरह का ही डेट नाइट टाइप Okay, so your wedding was like a grand affair. It was not by you guys, but it went on and became this really huge affair. So that set the trend for celebrity weddings and was the scale of the wedding planned or it was unfolded like organically, like वो बन गया जो बना. मतलब it became the trend everywhere. Okay, yeah. And अभी तक लोग follow कर रहे हैं वैसे. शुक्रिया शुक्रिया Thank शुक्रिया you so much. फॉलो करें वो ट्रेंड हाँ, अच्छा आपकी शादी का.
I feel सोचा like the समझा times नहीं have था, changed for sure. The times have changed. Now people are more into intimate stuff and like with the family mostly. And तब I feel like हमें नहीं था idea. फैमिली अफेयर था, मैंने सुना है था बहुत लोगों ने क्रैश किया था यहाँ पे। यही मैं कहने लगी थी था बट वो Thank रहा you. नहीं. हाँ एंड देन उस टाइम पे मुझे लगता है हमें ना हमने इस बारे में सोचा था ना हमें आइडिया था ऐसा होगा. और हाँ मतलब अगर बहुत पता होता है तो प्यारा हम कुछ कंट्रोल करते हैं सोचिए, शायद. मैं आपको बताऊं मैंने आपकी शादी कहाँ देखी थी. हाँ. मैंने आपकी शादी केबल टीवी पे देखी थी. वो जो केबल के केबल सस्ते TV इश्तेहार नहीं होते, सस्ते जो चैनल होते हैं जो उनके अपने होते हैं, अच्छा, सुने उन्होंने खाए? प्लीज हाँ हाँ, उन्होंने उन्होंने स्टार्ट किया था ये सारा कुछ. हाँ उन्होंने पूरी वीडियो आपकी बना के ना वो उधर लगा देते थे. एक्चुअली अगर हमें पता होता, बिकॉज हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसे हो जाएगा शादी का, तो हम उसको बहुत वॉच आउट करते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे उससे पहले कोई ट्रेंड ऐसा था नहीं. एग्जैक्टली तो हमारी कवाली नाइट या हमारी किसी एक्चुअली लोगों को लगता है हमने बहुत सारे फंक्शन किए थे. ये मिसकंसेप्शन हमने बिल्कुल नहीं किए थे. 2 किए थे, बाकी ढोलकियाँ थी. लेकिन उस वक्त वो कॉन्सेप्ट नहीं था ना. वन पिक्चर कम्स आउट एंड पीपल थिंक के पता नहीं एक पूरा वो है. सो वो खैर इट वाज ऑल इन द मेकिंग. ये सारा सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड ऑल. People were live from their Facebook feeds, which is I think not very जो cool. हमने बाद में देखा कि मतलब people got लाइव the clout ना from you guys. I mean Facebook Live was a new thing. तो but आप किसी की फैमिली में जाके ऐसे खैर बस वो होता गया. And then honestly speaking it went out of our hands too. I mean once it's on the internet it's on the internet. 1000 बंदा तो आया होगा. नहीं 1000 नहीं. हमने इतना तो हमने ख्याल रखा हुआ था. नहीं इनवाइट ये बिल्कुल भी नहीं था. नहीं बट हाँ कुछ उस I हद mean तक sure बात चली गई. people were out. I mean yeah खैर वो it's not about कितने लोग आए not थे. like we counted, but- It's about we didn't want our family wedding to be public affair. on the internet especially. But So it was beautiful to be very honest. You guys enjoyed it for sure. On cable TV. We enjoyed it so much. Have a bite. It's really nice, guys. Yeah, I will. I have questions a lot. So I'm हाँ. just like curious to. You ask a question and then you eat. मैंने कहा, We'll do the talking. So, okay, I love the picture that came out. The picture that I'm talking वो screen पे भी दिखाएंगे हम. When Farhan proposed you in front of the Eiffel Tower, the dream of every girl and guy. That was really special. To do. So क्या reaction था उस moment पे? What was this planned? or was Farhan it bhai, just- I cried so much. No, it wasn't planned for me. Yeah, Like I didn't know. But Farhan bhai, He, I'm sure, planned he'll tell it. his side of the story. Yeah. You tell thank God I didn't cry. नहीं I cried. मेरे लिए बहुत वो टेंशन वाला ट्रिप था. हाँ. Because I didn't know. I mean Yeah. I had an idea. That's why I asked the question. But you know Later I found out that he had been hiding that ring throughout the trip. ये tension थी basically. नहीं और कि बैग में नहीं मिल जाए, यहाँ नहीं मिल जाए, वहाँ नहीं. नहीं और वो बस एक वो बहुत था कि you know didn't tell her and उसको ये भी कहना है कि आज ड्रेस ऐसा कोई पहनो और इधर and I didn't meet her like I didn't go with her. Yeah. I met her there. I went to the Eiffel Tower and I saw him there. I met her there. So He had उधर to make that happen. Yeah. उधर उस टाइम पे पहुंचाना और ये कि बिल्कुल ही कोई डेनिम ही ना पहनी हो ना उसमें. कि मैं बाद में कहूँ मेरी pictures नहीं अच्छी है. सही बात है. So that whole thing was quite. But when it was done, we had Tension तो we had a लेकिन lot of definitely. I fun. love the picture. Create also. that वो moment. picture बड़ा मजे का था. It was the best picture that came out at this. Yeah, and the people around us, they were clapping and all. वो उस जगह की माहौल ही ऐसा है. मेरा ख्याल है आगे 4-5 और बैठे हुए थे मेरे जैसे. जिन्होंने अभी करना था. So, यार I want to come to Eiffel Tower again. That was a very beautiful moment. So, and आपने अपना reaction नहीं बताया वैसे. रो रही थी. मतलब how यही did था. you? Well, yeah, she started crying and she hugged me. Literally. इतनी देर में रोती रही. Oh, you expecting that वैसे? Not at all. For him Not being so romantic like that. मतलब एक मैंने कहा शायद अभी इतनी देर रो के हट के कि I'm so sorry, you got me wrong. हाँ वैसे ये भी हो सकता है. ये मैं भी हो रोके कहूँ कि नहीं. नहीं मतलब अगर हम फिल्मी वे में सोचे कि मैं कहूँ कि नहीं फिल्मी वे में वो है जो हुआ है. So I think that moment was very beautiful, as you said. You were crying and it was very filmy, obviously. But then who the first call आपने किसको की?
इसके बाद So मुझे कॉल किसी को इसलिए नहीं करनी पड़ी. My best friends have always been my siblings and they were right there. They were the ones who planned it with him. और एक्चुअली उस दिन सुबह से वो मुझे अनॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा. अच्छा. पहले उनको शॉपिंग जाना था सुबह सुबह. मैं कह रही हूँ गाइस सुबह सुबह शॉपिंग. अच्छा अब शॉपिंग पहुँच गए. देन बोथ माई सिबलिंग्स आर टेलिंग मी टू buy this specific dress that I was like it's fine, why buy it right now? They're like नहीं बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही अच्छा है, just buy it. अच्छा मैंने buy कर लिया. Now they're telling me to wear it. मैंने कहा guys what are you doing? It was so off. Yeah. Like अजीब एक माहौल सा बनाया हुआ था awkward सा कि मैंने कहा क्यों क्या मैं अच्छी नहीं लग रही. मतलब why are you guys saying that? हमने अभी अपना कुछ जो भी घूमना फिरना है या you know आप टूरिस्टी जगहों पे जाते हो इस तरह की. तो मैं उनको कह रही हूँ वायर. मुझे लगा शायद पता नहीं ये उनको अच्छा नहीं लग रहा मैंने जो पहना हुआ है. मैंने कहा क्यों ये सही है पिक्चर्स के लिए. तो एक पूरी एक लंबी कॉन्वर्सेशन हो रही है while the shopping is happening कि वो मुझे कह रहे हैं ये पहन के ही निकलो मॉल से. हम ये ही पहन कर I'm जाएंगे. glad she didn't get the hint. I did not. नहीं ये इस तरह की चीज़ तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ना कि आप कोई मतलब प्रपोजल ही होगा. And also he was not in Europe at the moment. I was So- traveling from India Yeah, for a he concert. went with us. Then he Went went back. to India for a concert. So मुझे ये भी नहीं पता था कि ये उस I दिन was in वापस आ रहा Paris. है. So yeah, So, that is how surprised I was. Surprising. और मैं थोड़ी उस बात पे ऑफ थी कि हमारे ट्रिप के बीच में से अच्छा कॉन्सर्ट अच्छा चलो कि he's gonna come back in 3-4 whatever days और ट्रैवलिंग का जो भी टाइम लगेगा. तो मुझे उस दिन की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि he will be there and he will be कुछ उसने मुझे परसों या तरसों टाइप बताया हुआ था कि मैं पहुंच जाऊंगा and I'll join you guys back in the trip. Okay. So yeah, I was a little वो ना कि हाँ अच्छा अच्छा okay. But and it's then so beautiful yeah, ऐसे hearing this shocked out. and surprised in a very good way. Yeah. Okay. Like any other couple, you likely face challenges because हर relationship I feel there's always ups and downs. And how is that one thing that you guys kept it together? And because challenges तो हर इंसान की ज़िंदगी में I feel हमारे भी हर रोज़ आते हैं. So how did you guys kept it together? And like you know, mashallah, you're here again. I love you guys together. हमारे challenges तो काफी सबको So I पता ही like थे. I love the hashtag. Honestly, I used it yesterday when we posted a picture Okay. of you. Which is? Urhan. और I love that. You know, and I think that is what all is about. People love you guys together. So how did you face the challenges in your See, personal life? honestly, our situation was quite clear and was quite open Yeah. in front of everybody. मुझे लगता है one thing which I really respect about her and what went really right in our situation was कि अगर हम थोड़े से whatever happened, Yeah. we didn't say or did anything to harm each other. Yeah. मुझे लगता है कि सारे couples को जो भी who are gonna be couples or who are already couples, I think one thing it's safe to say that we can tell them कि ये सबसे बड़ा turn off किसी भी कंपेनियन के लिए, दो चाहे दोस्त लड़के हों, दो लड़कियां दोस्त हों, you're in a relationship, the first thing you do is that you go behind their back and you start talking. I think I feel like हमारा उसमें नाराज़गी हो सकती है लेकिन respect was It's there. very important. It was there. Yeah. So which is also why we are always able to resolve things. I think that door was always open, and then a lot of things that I mean that's why, and I think a lot of prayers. Yeah. And also when you come out of a situation like that, if there's a misunderstanding or if there's a whatever इस तरह की कोई भी चीज़ अगर किसी के साथ हो, if you are able to emerge out of it, I feel like you come back stronger. You come back stronger and prettier. Yeah. I say that. That is important. Rise in love, they say. You know. Yeah, that definitely happened. So I now want to talk about the favorite person apart from you two. Like she's my more favorite person in your family, I would say. Okay. I'm sorry, don't judge me, but like she's the most cutest person I've ever met. So life has changed significantly since the arrival of Ara, baby Ara, pretty Ara. So how has parenthood like impacted your life? Because I think बहुत changes आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, प्यारे changes. I don't know how to say it in words, but I feel like it's such a miracle, such a blessing. Yeah. मुझे लगता है we literally cry almost every day, है ना? Yeah. And we are like,
मतलब कोई वर्ड्स नहीं हो सकते इसके लिए, बट आई वुड से दैट देयर इज मोर gratitude in life, there's more joy, there's more love, there's more like everything is just amazing. I think I mean talking about myself, couldn't have ever thought that I can have that feelings for Yeah, a human being. same. You know, it's a different ball game altogether. Yeah. And I've started respecting her more. It's a beautiful thing. It's like the concept of life changes, and not that it just everything becomes more beautiful. You know, it's not that you become less happening. I tell you, when Ara was about to be born, I went crazy after gym. I started going to gym that I have to be fit for my daughter and I have to be, you know. So it's not that. It's Yeah, he was all excited to welcome her. beautiful in every way. कि वो It's कैसा हमें beautiful. देखेगा। I'm more focused on work. Whatever I do, I'm more focused. And I see the rush that you want to go home as well. Oh yeah. Yeah. So there was a thing called FOMO in life. I don't know where it is now. So there's no, it's, you know, when we three are together, it's universe. That's it. It is. So You wrote the caption also, My Universe. yeah. So yeah, actually, Yeah, this is so pretty. that's says her. that We quite named her often. Jahan Ara. Jahan. So she's our Jahan. Cute. I can't stop talking about her. She's Same. the cutest Same. person. Okay. When can fans expect any project together? जल्दी से बता दे please हमारे लिए कुछ interesting आ रहा है जहाँ पे हमें Orhan देखने को मिलेंगे. Soon, inshallah. Yeah. Inshallah? Yeah. Yeah, I'm yeah. excited. for Working that. on something. We're working on a couple of I know things. that, but like I'm not going to tell you guys. Oh. DM me later. आप मैं तो आपके आपको थोड़ा fans सा आपस हाँ. की बात है, मुझे literally DM करते हैं और आपका मावरा की शादी पे जो डांस था वो पूरा नहीं आया था and everybody was going crazy. उसान प्लीज हमें ये सेंड कर दे अपलोड कर दे कुछ तो कर दे प्लीज हमें तौबा 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 देखना है. मैंने कहा अब वो सबर मेरा करो. फेवरेट था वैसे. मेरा भी Yeah. बहुत fit. Yeah. He's an outstanding dancer. Just not saying any bad thing, but like the dance flows in your body. Yeah. कोई मुझे वो वाली फिल्म चाहिए ना आपकी वो 200-300 डांसर वाली पीछे नाच रहे है ना, होनी चाहिए. Video ना? नहीं Film. Film चाहिए. हाँ. वीडियो भी हो सकती है. वीडियो भी हो हाँ वीडियो इज आल्सो लाइक फिल्म ही होती है गाना. but I more prefer like he's my hero so फिल्म. हाँ. ज़रूर, inshallah, soon. So guys, now we have, before we go to the next segment, No. I would like to present from my side flowers that I brought so many gifts for you guys. But इसमें मैं जरा उठ के खाना भी जाऊँ. और गिफ्ट्स भी. हाँ. Heart ones are for you. Oh, thank you. And ये basket वाला ना is for you. Allah. Why? मैं क्यों फंस लड़कों के गया. पास दिल नहीं होता? आपके पास है लेकिन आपका दिल यहाँ है ना. अच्छा ठीक. मैंने उनको आपका दिया दिल यहाँ है. आपका दिल यहाँ है. बिल्कुल सही है. बातों को ही खा रहे हो आप सब लोग. ये ले ले please. आके आप ले लें इनसे. Please, thank you. So we have couple compatibility questions and this is a competition. So if you win, you're gonna wear the gift hamper from Belco Chocolates. अच्छा. So आपसे सवालात पूछे जाएंगे. देखिए पहला कंपटीशन तो मैं जीत गई हूँ. मैं साथ साथ इतना खा रही हूँ. आप लोग तो कुछ खा भी हम नहीं. भी खा रहे हैं. वो हम ऐसे नहीं वो कुछ सूंघ नहीं आप रहे हैं खा सिर्फ. नहीं खा रहे हो. And मुझे कह के साथ साथ खाना है. the one that wins हाँ. will get the gift hamper. And ये बड़ा crazy as gift hamper है. Sorry ठीक मेरे है. कांटे गिर रहे हैं आज. लेकिन this will be the person who wins it first. So I have some questions, quick answers, no thinking and no cheating. ठीक है? So who is the bigger romantic in the relationship? Me. I can guess that. That's easy. What's the most epic surprise you've ever planned for each other? मेरा तो Proposal. एपिक सरप्राइज था. प्रपोजल ही था. That was mine. This was his. You tell yours. नहीं मतलब मेरे लिए. नहीं आपका क्या था इनके लिए? मेरा ये इधर रख दो. पहले ये क्या है? क्या hamper? हाँ, नहीं आपके चुप पास करो आ एक रहा है। सेकंड. पहले 2 questions में पता लग गया. मेरी बात सुने. मैं मतलब प्रपोजल जो है उससे ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ. I करती हूँ मैं कुछ तो भी कर सकती सरप्राइज. हैं, कुछ तो करो. नहीं मैं करती हूँ. हाँ. शेख She कुछ said कर. she said yes. हाँ आई सरप्राइज्ड हिम. नो बट मतलब वैसे अगर आप कुछ भी करो तो उससे ऊपर तो कुछ नहीं जा सकता ना यार. कुछ भी हो सकता है.
नहीं उससे ऊपर try कुछ नहीं जा किया। सकता आप गिफ्ट दो फरहान भाई, बेशक आपका है। आप बर्थडे मैंने बर्थडे सरप्राइजेस बहुत दफा किए हुए हैं बट हाउ कैन आई से कि वो प्रपोजल से ऊपर था चलो. ये बात है, चलो, सही है ना give it देखो to यार you. प्लीज गिव मी अ पॉइंट फॉर Yeah, दिस I या am giving to you. या Well, the biggest surprise she has given me is Ara. हाँ चलो फिर तो मैं विनर होगी ये आंसर दोबारा रिकॉर्ड कर नाइस ओके सो इफ यू कुड रिक्रिएट योर फर्स्ट डेट व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली नथिंग राइट सेम I guess I'll eat a bit more. No, but nothing actually. Okay. हाँ, क्या Who is change more किया? likely to write a love letter? Oh, that old school romantic. Yeah, I'll probably sing that letter. Oh, yeah. See, man with multiple talents. That's true. Okay, so who is the better dancer? Obviously. Obviously him. Farhan bhai. Oh, sorry, I'm Absolutely. answering for sorry. हाँ, he Yes, is. It's she's a fact. also Yeah, amazing, by yeah. the way. You guys, वो मुझे वो वाला स्लो गाना नहीं तो बड़ा अच्छा लगा था Yeah. आपको मैंने सबसे पहले संडे पे लगाया था तेज है आप बड़े. Okay, so what's your go-to karaoke jam? Karaoke. जो भी है वो अल्फाज मुझे नहीं हम वो गाना बहुत गाते हैं ना. जब कोई बात बिगड़ जाए. आए. Cute. Yeah. Beautiful meaning. Okay, if you could switch lives for a day, what would you do? आप उर्वा बने और उर्वा मुझे फरहान नहीं बने. बनना कोई और. नहीं आप फरहान बन रही है. नहीं मुझे फरहान की उर्वाई बनना. ओए. मुझे लग रहा है हम पर मेरे पास आएगा. ये सवाल के जवाब के बाद तो आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ अच्छा who is more likely to plan a spontaneous road trip Me. Him. okay Yeah. you like the long And she drive. probably says why. और I'll probably say no. Yeah. That is so spontaneous. Can you Let's please order plan it? something at house. I think she's a fantastic planner to be very honest क्योंकि अगर हम शूट भी करें या कुछ भी करें she needs to know every detail nitty gritty details beforehand Yeah. and I think that is She's the not big on super surprises actually. professional thing to do She's not big on surprises. So, you know, you have to आपने be. सबसे बड़ा सरप्राइज दे ही दिया हाँ, इसीलिए तो डर भी रहा था. Exactly. है ना? हाँ. okay who is the bigger jokester in the relationship Him. Well, I was till lately, but now she gives me a tough time. tough time Yeah. yeah she has the one liners She, now कभी कभी she's getting there. Learning from him. So yeah. What's the most ridiculous argument you have ever had? Like उसका कोई मतलब ही argument करने का था ही नहीं. अक्सर होते हैं ऐसे तो. कैसे तोलिया रख दिया टाइप्स. हाँ. हाँ, ये वाला ये भी होता है, लेकिन yeah, like everybody else. रिडिकुलस वाले तो बहुत से होते हैं हैं. जो आप थोड़ी देर बाद कहते हो कि क्या यार हम क्या बात कर रहे हैं. आपके वही मैसेज जो हमारे घरों में होते हैं. जाहिर बिल्कुल. है. शायद उससे भी दो. हो गया शायद उसमें पानी डाल के यूज कर लो. साबुन इतने पिट्टू सा रह गया वो दूसरे के साथ अटैच करो टाइप्स प्रॉब्लम होते हैं. बिल्कुल होते और हैं. टूथपेस्ट खत्म हो गई तो उसको ऐसे ना वो मिर्ची से निकालो ताकि वो That's me. देखिए स्टार के घर में भी यही होता है. हम वैसे ही ये होते रहते हैं. मैं तो बहुत करती हाँ. हूँ. शैम्पू की बॉटल भी खत्म होता है. पानी डाल के घिस ऐसो And he hates it. यार इसमें पानी. Or at least if you're doing it, inform the other one. surprise शैम्पू ना मिले. निकाला इतना पानी. That's true. Okay, who is more likely to cry during sad movie? कि sad movie लगी हुई है. Cry? Probably वो बंद ही करनी पड़ I जाएगी start movie. howling. अच्छा मैं भी ऐसे ही हूँ. मुझे It's बहुत good. फील हो जाता है कैरेक्टर्स के It's लिए. good. और मैं उनके बारे में ऐसे बात करने लगती हूँ कि वो असली में है. मैंने कल रात को ही कोई ऐसी मूवी देखी बहुत सैड मूवी थी और मैंने हाँ. रात को 5:30 बजे तक देखी सुबह हाँ. सॉरी और वो ना बहुत खूबसूरत सैड मूवी थी लेकिन फिर मैं बहुत रोया. Yeah, उसमें मुझे हंसी भी आई. I tell you a very interesting देर thing about her. जो रहती हूँ. So you know, if there's a movie or something or drama or anything, Yeah. मैं कहूँ ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सेंस बनती है इस बात की. She will pause it and she will start explaining it to me. No, उसने जो ये किया है, ये feel कर she रहा है. becomes the team of the. He says आप उनके साथ रहती हो. मैं ये बिग बॉस में करता हूँ. No, and I tell you, we do this for living. I mean, we know what's going on. Exactly. And why so No, but I attached get to- so invested like. If the story is and I- good, yeah. So yeah, If the story is it's good. fun. कभी बैड भी हो तो मैं इन्वेस्ट हो जाती हूँ. When I'm watching something, Yeah, but guilty pleasure भी होता है नहीं. believe in कुछ it. देखना. You should start a show with her where she reviews We things. already do. You We already do. you have no idea. You have no idea. You people Audra has been enjoying that. people would be in for a treat. You have no idea
You guys have already done it? Azra and Urva has this show, very amazing show. Like you should watch it too. What If you show? Haven't? We can't name it, but yeah, there's a show, and they just call each other. We call each other and and they're they like, just talk about it. कि ये क्या कर रहा था उस सीन में, ये क्या हो रहा है, and yeah, it's become our guilty pleasure. But it is You so should- funny to hear You them should out. come on camera with that. Yeah. So you know. Please don't. No, we We can't shouldn't. keep memes. Okay. What's that one thing that always makes you guys laugh? Like वो inside joke होता है कोई. बहुत से होते हैं, बहुत से होते हैं. लोगों के ऊपर भी होते हैं. Yeah. लोगों नहीं, के ऊपर मतलब लोगों के ऊपर मतलब like for example somebody has done this stupid thing and then you guys मुझे लगता know है हमारे nobody else हमारे knows. जोक्स में से ज्यादातर लोगों पे नहीं होते, situations. प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होती है, Situations पे। सिचुएशनल होते हैं, But which we have a- पहले he used to do only, तो मुझे हंसी See, I आती tell you, generally, musicians have a very good sense of humor. Yeah. The musician community. Yeah, his band members also, Everybody, yeah. every musician, each one of them I know. Yeah. I don't know. There's a reason for it because हम सब साथ. नहीं फरहान भाई आपका है. So now, actually, thank God that my partner has a good sense of humor too. Yeah. So yeah, so we laugh Learning on it from we laugh on good jokes, Yeah. not generally. Yeah. Great. Yeah. Okay, who is more likely to make the other laugh even on the worst situations? Him. कि अगर Him. अच्छा। him. Yeah. No. कि अगर टायर पंचर हो गया तो अब No. करते हो आप? नहीं आप करते हो, आप No. सिचुएशन को बहुत लाइट कर देते हो. सिचुएशन लाइट में ले सकता हूँ बट या इफ देयर इज अ थिंग टू लाफ ऑन देन प्रोबेबली ऐसे नहीं पागल नहीं हूँ मैं. लेकिन सवाल ये था कि कोई थोड़ी इस तरह की हाँ तो सिचुएशन है जो ऑफ है, it's not like तो ही कैन रियली लाइक, आई कैन मेक इट लाइट. जो कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेरे साथ ये होता है कि थोड़ी सी मतलब कुछ ज़्यादा मसला नहीं हो, थोड़ा सा मसला हो तो मैं टेंशन बहुत दे देता हूँ, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम मसला हो गया ना मैं बड़ा चिल हो जाता हूँ. मेरा ये स्विच है. अच्छा. समझ नहीं आती मुझे. अच्छा. फरहान का फॉरेन ऐसे हो I think We it's have good. this really cool pasta here now, Okay. which was made there हमारे पीछे ही. हाँ, तो हाँ तो खाना है ये. आप लोग तो try कुछ करो, खा नहीं रहे, please. मैं ही खाए जा रही आप please try हूँ. सीरियस करें. सीरियस सवालों में मेरे हाँ. बाइट्स आ रहे होंगे. नहीं कोई मजे की फरहान भाई आप भी ट्राई करें. मैं करता हूँ जी. That's amazing. Okay, so I have this last 2 questions, guys. Sorry, इंटरव्यू जल्दी खत्म हो गया क्योंकि सवाल ही इतने मैंने पूछे थे. हाँ जल्दी ना. जल्दी था. ठीक है. मैं आवाम आपको देखना चाहती, तो अगर मैं 2 अच्छा. घंटे भी लोगों के साथ बात करता यहाँ पे ना तो वो आपको एंजॉय करते. ठीक है. लेकिन वैसे हम तो हमने थोड़ा- पूरा खाना खा लिया बातें करते हाँ करते. हम मैंने तो बड़ा टाइम गुजारा, आप लोगों के लिए बस 20 मिनट ही है. ओके सो लास्ट क्वेश्चन एंड आई नो हु इज द क्लियर विनर. हाँ. So if you could travel anywhere in the world together, where would you go? We have quite a few places मतलब एक on the bucket list. favorite होता है. I would really want to go to Switzerland with her. That's on my Yes. bucket list. Yeah, Please we also want to recreate go that to song. Spain. We also want to go to Greece, and there's a list. DDLJ का गाना recreate कौन सा वाला? वो जो भागती है काजोल और वो है ना? शाहरुख पीछे भागता Yeah, I है. would love to. है ना मजे का है. Thank you guys, thank you so much, and thank you for letting me invade your dinner. And Yeah. you guys look stunning, and especially you're wearing Juice by Damas. I think that is all. I love it. You guys look very chic and very regal. अब इस तारीफ का कोई मतलब ही नहीं लग रहा. नहीं, तारीफ का मतलब ये है कि आखिर में मैं नहीं सिर्फ देखिए ये कहना मतलब है, वरना वो ये बात ही ना करता. हाँ, वो चुप रहता. हाँ, मतलब ये है कि आप वाकई प्यारे लग रहे हैं. So मैं Thank बोलने you, वाला thank you, इंसान thank you, हूँ. thank I'm the one that expresses. So the guys, the clear winner in my eyes is Orhan. So which means both of you guys. Really? Yeah. क्योंकि दोनों के I सवाल. was gonna say कि You guys are very synced. You guys are very synced. You know. What do you mean? यार, You मुझे should लगा be- मैं जीत रही Should हूँ. be happy we both won. Yeah, I'm So, just make happy. a jumper. मुझे Please, एकदम guys, लगा कि अरे share. फरहान. Don't अच्छा. fight. Share. No, we're not Yeah, fighting. thank you. It's anyway, it's anyway Thank you hurts. so much for coming and thank you so much. Oh, coming. Thank you so much for having me. And क्या वो पुराना वाला मेरा चल रहा है. हाँ. So any parting things you want to say to your fans that they love you more and more every day. So ये कैमरा आपका है दोनों का. Valentine पे कुछ प्यारा सा पैगाम दे दें. First of all, thank you so much. It was really fun talking to you. And thank you everybody who loves us and who ships for us and prays for us. And love your loved ones always. आपका. I would just say thank you to everyone for their love, and thank you for having us. Thank you. And I just love the food. So Thank you so much. I'm Thanks gonna- to Barisico by Sarah, basically. Her food is amazing. So thank you guys. Thank you both of you.
थैंक यू.